So let's start with IS 16. Leases. What do you guys understand with the term leases? Any idea, anything? It can be said that if I am renting out a property, Mm-hmm. uh, the other person that who rents the property provides the lease for some period of time, Mm-hmm. and I have to give something in exchange after the period ends. Correct, correct, partially correct. Lease क्या होता है? It's a kind of rental agreement between a lessor and a lessee. Okay. Okay? Change क्यों नहीं हो रहा है? Mm-hmm. Who is lessor? Who is less? Who is lesser? The person who receives the asset. Correct? In FR, we only have to learn accounting of lessee, not lessor. This will be covered in SPR. Okay, but I do have notes of SPR as well. SPR lesser counting. We'll learn few bit of gist of that, so that we can understand a bit of that as well. Although examination में test नहीं होगा, but still थोड़ा idea के लिए we'll learn. Mhm. Okay, I don't know why my system is a bit lagging. What is lease? Let's learn this with an definition. A lease is a contract or a part of contract that conveys the right to use of an asset for a period of time in exchange of consideration. Okay, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो लेसी को राइट देता है कोई एसेट यूज करने के लिए फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज लेसी लेसर को कंसिडरेशन पे करता है कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ रेंटल Okay. एवरी मंथ एवरी ईयर दैट वे Hmm. लीज की डेफिनेशन के अंदर आने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू कंडीशंस सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि क्या ये लीज है भी कि नहीं क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली लीज है कि नहीं तो अंडरस्टैंड दैट वी हैव फ्यू कंडीशन फर्स्ट जो असेट we are renting out, we are giving to somebody on lease, that should be identified. Identified मतलब
We can see, we can touch, that should be identified कि ये asset lessee को जाएगा. Okay. Or customer, who is the customer here? Lessee. Correct. Lessee control the use. Okay. उसके पास सब कुछ कंट्रोल है. फॉर एग्जांपल 5 ईयर के लिए कोई असेट दिया हुआ है, कार दी हुई है, बस दिया हुआ है फॉर 5 ईयर्स. तो लेसी के पास फुल राइट है उसको कैसे भी यूज करने के लिए, और सारा इकोनॉमिक बेनिफिट भी कहाँ किसको जाएगा? लेसी को. हम्म. नो सब आइडेंटिफाई असेट, नो सब्सटेंशियल राइट टू सब्स्टिट्यूट. कोई सब्सटेंटिव राइट नहीं है. सब्सटेंटिव मतलब कोई ऐसी राइट नहीं कि उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते. फॉर एग्जांपल यू हैव सीन कि बहुत सारी कंपनी में बसेस होती हैं जो एम्प्लॉयज को एक जगह से अकोमोडेट करती है टू द वर्क स्पेस. I tell you with an example. One of my friend who is in UAE, हम्म. उनके पास उसको एक फैसिलिटी है कि फ्रॉम अ वन पिकअप पॉइंट नियर बाय टू हिज होम, वहां से उसको बस बस पिक करेगी, ऑफिस बस, उसको वर्क स्पेस पे दिल्ली लेके जाएगी हम्म. और रिटर्न भी लेके आएगी. ओके. तो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, दैट बस इज ओन्ड बाय द कंपनी एक्चुअली, और दोज आर ऑन लीज? देयर आर हाई चांसेस कि वो सारी बसेस लीज पे होंगी, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करेगा. अराउंड बसेस कॉस्ट इन करोड़. So it's always a better option to lease those assets for a particular period of time and use those in our business and earn all the economic benefit. तो इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे मिल रहा है? वो बसेस अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, कस्टम हम्म. एम्प्लॉयज को अकोमोडेशन फैसिलिटी मिल रहा है. हम्म. तो उसके और अकोमोडेशन बेनिफिट मिल रहा है तो इकोनॉमिक बेनिफिट है ना एंटिटी के लिए, बिजनेस हाँ. के लिए. तो क्योंकि एम्प्लॉय हाँ. के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट कैन बी एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी, रेपुटेशन, गुड ब्रांड इमेज, एनीथिंग. तो अगर किसी को ये फैसिलिटी मिल रही है तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय विल बी हैप्पी. उसका अकोमोड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस नहीं लगेगा. करेक्ट. राइट. तो दिस रिप्रेजेंट्स अ गुड इमेज इन द मार्केट, यू कैन से इन दैट वे. सो इट्स एन इकोनॉमिक बेनिफिट. बिजनेस के पास राइट है कि कौन सी बस कहाँ जाएगी. फॉर एग्जांपल बस नंबर 1509 will go to route A. Bus number 150 will go to route B, etc. etc. So what the business is doing? Directing the use ना. A रूट ट्रैवल करेगी, बी रूट ट्रैवल करेगी. करेक्ट. हम्म. हम्म. और आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या होगा, उस बसेस पे मार्क्ड होंगे दिस इज द एंटिटी. फॉर एग्जांपल अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, अदानी अदानी सब कुछ ब्रांड इमेज होगा. करेक्ट. जैसे अभी फॉर एग्जांपल आज आईपीएल फाइनल है, राइट. तो जो बसेस होती है टीम्स की, फ्रेंचाइजेस की, उस पे सब जगह ब्रांडिंग होती है हर टीम्स की. हाँ. तो इफ फॉर एग्जांपल आरसीबी की बस आ रही है और आरसीबी का ब्रांड इमेज है, तो क्या लगता है आरसीबी फ्रेंचाइजी ओन दैट बस? नो. तो दैट बस मोस्ट प्रोबेबली विल बी ऑन लीज. तो अगर बस ब्रांडिंग करी करी हुई है तो इट्स एन आइडेंटिफाई असेट ना, कि चार बसेस खड़ी है तो इसमें से आरसीबी की ब्रांडिंग है, तो या दिस इज द आइडेंटिफाइड असेट. करेक्ट. हम्म. हम्म. आइडेंटिफाइड असेट. All economic benefit will be will be earned by the entity, and the entity has right to direct the use of asset. Correct. If all Right. these conditions are met, then we can say that yeah, it's a lease agreement. Correct. We are into IFRS 16. Okay. We just हम्म. now learn the definition. Now we'll enter into more technicality. You understood the definition, right? Yes. Before going into more technicalities, let's solve this.
Question 1. To understand the definition more detail. With the above definition, if you could identify this transaction is a lease transaction or not, let's check it out. Go ahead. Okay. Hmm. आइडेंटिफाइड असेट में एक और कंडीशन है कि नो सब्सटैंटिव राइट टू सब्स्टिट्यूट. ऐसा नहीं कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम सब दूसरी बस ही जा रही है टू पिक एम्प्लॉयज. Hmm. अगर कुछ बीच में बस में कुछ मेंटेनेंस चाहिए तो हाँ इट कैन बी कंसिडर कि उस पर्टिकुलर फॉर एग्जाम्पल फॉर अ वीक बस हैज बीन इनटू मेंटेनेंस, तो सेम टाइप की Hmm. बस दूसरी दूसरी टाइम उसको कवर अप कर रही है, तो दैट इज फाइन. सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूट राइट. Okay. 1 minute. I think yes, it is an identified asset because as the condition says that no substantial rights to substitute. हम्म. Here there are also written that if a rail car needs to be serviced, हम्म. supplier is required to substitute a rail car of the same type. करेक्ट. This says that it is an identified asset, so that's हम्म. why it is. करेक्ट करेक्ट. जस्ट रीड दिस एक्सप्लेनेशन. Hmm. सिर्फ एक ही Okay. चीज कारण सब्स्टिट्यूट हो रही है बसेस जस्ट बिकॉज ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और कॉमन सेंस से अगर Hmm. रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं होगा तो सारा बेनिफिट कैसे मिलेगा? सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा ना. Right. दैट इज फाइन. इसलिए डेफिनेशन में लिखा है नो सब्सटैंटिव राइट टू सब्स्टिट्यूट. Hmm. Also. लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्लो चार्ट. If there is a asset that is identified, if your answer is yes, Hmm. then we'll go into next step. Does the customer have right to obtain substantially all the economic benefits? Substantially मतलब ज्यादातर सारी economic benefit customer को जा रही है. If your answer is yes, then we'll say if the customer has right to direct the use of the asset. क्या कस्टमर के पास सब कुछ है, डायरेक्ट कर सकता है कहाँ क्या सब कुछ डिसीजन कस्टमर के पास है. If your answer is yes, then we can say that this is an lease contract. If this is not an identified asset, then our answer is no, then we are out of IFRS system.
नेक्स्ट स्टेप पर जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आइडेंटिफाई एसेट ही नहीं है तो फिर वी आर आउट ऑफ IFRS 16। ओके ओके। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ आइडेंटिफाइंग एन एसेट? आइडेंटिफाई मतलब इट, सी, एक ब्रॉड टर्म है आइडेंटिफाई करने का। आइडेंटिफाई, आई जस्ट एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल कि आरसीबी की ब्रांडिंग लगी है, तो इट्स एन आइडेंटिफाई एसेट। अगर ब्रांडिंग नहीं भी लगी हुई है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट से कह रहा है कि द बस नंबर इज 1509, हम्म। ये बस सर्विसेज देगी एंटिटी को, राइट राइट। तो इट्स एन आइडेंटिफाइड एसेट ना, कि ओके। explicitly the contract is saying something. हम्म। करेक्ट। अंडरस्टूड। या। एंड सब्सटेंशियली का मतलब है ज्यादातर। तो राइट। नो सब्सटेंटिव राइट टू सब्स्टिट्यूट। ज्यादातर राइट नहीं है कि सब्स्टिट्यूट कर सके, पर सब्स्टिट्यूट कहाँ कर सकते हैं? अगर कुछ मेंटेनेंस, रिपेयर्स कुछ जरूरी है असेट को फंक्शन करने के लिए, उसके हम्म। वजह से सब्स्टिट्यूट हो रहा है असेट, तो दैट इज फाइन। इसलिए राइट सब्सटेंसिव लिखा है। राइट। ओके। और अंडरस्टूड। या। ओके, I don't know why in Kaplan study text these conditions are not mentioned. Those are, या। but not in a very detailed way. Just in definition, they have explained. No worries. Okay. So how are we going to account for lease lessee accounting? सबसे पहले तो डू यू नो व्हाई IFRS 16 has launched? अगर सिंपल, अगर लॉजिक सेज, नॉर्मल अकाउंटिंग लॉजिक सेज कि if a contract, rental contract exists for more than 1 year, let's take example of 5 years. तो डोंट यू थिंक ये अकाउंटिंग एंट्री बन के, अगर ये अकाउंटिंग एंट्री हम पास करें तो वी डोंट इवन नीड IFRS 16, कि डेबिट रेंटल एक्सपेंस जो हम लेसी को पे करेंगे, लेसी मतलब वी, जिसने असेट हम्म लिया हुआ है। ओके। हम्म और क्रेडिट रेंट पेबल, लायबिलिटी, तो फिर क्वेश्चन ही नहीं होता IFRS 16 का। सिंपल यही, अगर हम अकाउंटिंग मेथड यूज करें तो। बट बट व्हाट आई इफ इट्स अ बट आई हैव शॉर्ट ऑलवेज टर्म? टोल्ड यू दैट शॉर्ट टर्म होता तो फिर भी, शॉर्ट टर्म है तो IFRS 16 उसके लिए अलग गाइडेंस दे रहा है, तो दैट विल लर्न। बट अगर सिंपल यही अकाउंटिंग एंट्री हम पास करें तो डोंट यू थिंक इट्स करेक्ट ओनली? हमको IFRS 16 की जरूरत ही नहीं है। एंड इफ यू थिंक इट्स नॉट, देन व्हाई? आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि अकाउंटिंग, हम अगर रिपोर्टिंग कुछ कर रहे हैं, वी आर डूइंग अकाउंटिंग, हम्म हम्म। तो हमेशा वो फेयर होनी चाहिए, जो एक्चुअल में है वही दिखना चाहिए। राइट। ठीक है। वी शुड डू फेयर अकाउंटिंग, फेयर प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? या वी आर शोइंग रेंटल एज एन एक्सपेंस, और यहाँ पे लायबिलिटी शो हो रही है, दैट इज फाइन। हम्म बट लेसी, वी, द हम्म। asset that we got for 5 years, and for that period we have direct to use the asset. In short, we can do anything with the asset for those years, or we can say for those years we are the owner. Correct. For 5 years I am the owner of this bus, no? Correct. तो अगर मैं यही एंट्री पास करूं, रेंटल टू रेंटल पेबल, तो क्या हो रहा है? एक्सपेंस और लायबिलिटी शो हो रही है, बट
if I'm the owner of this asset for 5 years, don't you think मेरे asset में भी मेरे balance sheet में भी वो asset आना चाहिए for that 5 years? हाँ आना चाहिए. क्योंकि I am gaining the economic benefit, or we have learned in asset definition that anything which gives us economic benefit for more than 1 year, we account it as a non-current asset. Hmm. Correct? Right. So that's why IFRS 16 came into picture. What IFRS 16 says कि अगर कोई asset आपको मिला हुआ है, firstly, what you will do this, you will debit asset, you will bring that asset in our books of account as right to use asset. कभी भी ये वर्ड बैलेंस शीट में दिख गया ना, राइट टू यूज असेट, इसका मतलब समझना कोई असेट एंटिटी ने लीज पे लिया हुआ है और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर रहे हैं. करेक्ट. Okay. इन आवर एग्जांपल इट वाज बसेस. Right. डेबिट राइट ऑफ यूज असेट, क्रेडिट लीज लायबिलिटी. वो तो हम यहाँ भी कर रहे थे, रेंटल पेबल लायबिलिटी. Hmm. करेक्ट. Yes. अब व्हाट आईएफआरएस 16 आल्सो सेज कि ये जो राइट ऑफ यूज असेट हम बसेस दिखा रहे हैं, बसेस को इन असेट, हम इसको डेप्रिशिएट भी करेंगे क्योंकि हम जो यूज कर रहे हैं वो हमारा ही खर्चा है ना. दैट इज आवर एक्सपेंस. हाँ. क्योंकि इफ वी आर द ओनर तो डेप्रिसिएशन का भी खर्चा हमारा ही है ना फॉर 5 years. Right. लेसर क्यों पे करेगा डेप्रिसिएशन का खर्चा? Hmm. तो विल डेप्रिशिएट द ROU, राइट ऑफ यूज असेट, फॉर द लीज पीरियड. ओके. एंड फॉर लीज लायबिलिटी will record interest cost as an expense because it's a liability. तो हम जिस इंक्रीमेंटल रेट पे हमने बोरो किया हुआ है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम इंटरेस्ट कॉस्ट भी बुक करेंगे. वी लर्न व्हाट इज रेट इंक्रीमेंटल रेट ऑफ बोरोइंग एवरीथिंग, बट जस्ट वांटेड टू गिव यू अ जिस्ट कि क्या है, व्हाट आर वी गोइंग टू डू. तो Hmm. अगर असेट बुक किया विल depreciate logic, because we are the owner for that period, so we are liable to bear the depreciation cost. Right. Okay. And for liability, we are uh, taking the asset on lease. So IFRS 16 says that we have to book interest cost on incremental rate of borrowing. Okay. तो पीएनएल में दो खर्चा जाएगा साल में, कौन सा खर्च, कौन से दो खर्चे? Depreciation and interest. ओके. डन. I just told you कि will depreciate the asset for lease period. Yeah. Sorry for the Yes. disturbance. Okay. So where we were, yeah, right of use and lease liability. I just told you that the asset will be depreciated for lease period. So Hmm. how do we assess the lease period? There could be three category in the lease contract. If the lease contract says that the contract is for 5 years, 10 years, but the non-cancellation period, मतलब
5 साल तक तो यू हैव टू बेयर द कॉस्ट. आफ्टर 5 ईयर यू कैन कैंसिल द लीज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब असेट को वापस दे सकते हो. Hmm. इसका मतलब 5 ईयर इज नॉन कैंसिलेशन पीरियड. Yes. ठीक है, तो लीज आईएफआरएस सेज दैट अगर नॉन कैंसिलेशन पीरियड कॉन्ट्रैक्ट में है, तो द लीज टर्म विल बी ओनली फॉर नॉन कैंसिलेशन पीरियड, क्योंकि उसके बाद अनसर्टेनिटी है ना कि हम कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करेंगे कि नहीं. बट नॉन कैंसिलेशन पीरियड इज फिक्स कि 5 ईयर्स तक तो वी आर गोइंग टू बी इनटू लीज कॉन्ट्रैक्ट. Hmm. करेक्ट. Second option, lessee. Lessee means we has option to extend or terminate. Lease contract is for 10 years. We have option after 10 years that we can either terminate the contract or extend for 12 years. Extend for 2 more years. The total lease term will be 12 years. So what IFRS 16 says that if it's, there is certainty from our end, correct? Our end, we are the business. We have taken few assets, few buses on lease. If we Hmm. are certain that we are going to extend the lease term for 2-3 years more, एंड इफ अगर हमारे साइड से सर्टेनिटी है दैट वी आर श्योर, इसका मतलब है कि हमारा लीज टर्म 10 नहीं 12 ईयर्स हो गया. Right. करेक्ट. तो हम 12 ईयर्स के हिसाब से लीज कॉन्ट्रैक्ट लीज अकाउंटिंग करेंगे. Okay. एंड इफ द कॉन्ट्रैक्ट सेज दैट लेसर हैज टर्मिनेशन ऑप्शन. लेसर मतलब जिसने दिया हुआ है एसेट, द एक्ट Hmm. द मेन ओनर, Hmm. अगर उसके पास टर्मिनेशन ऑप्शन है, तो हम असेस करेंगे कि कितनी सर्टेनिटी है कि वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होने देगा या उसी उस कॉन्ट्रैक्ट के बिटवीन ही उसको ब्रेक कर देगा. क्या सर्टेनिटी है, तो इट्स अ जजमेंट कि क्या पूरा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हो भी पाएगा कि नहीं. तो इफ योर जजमेंट सेज दैट आउट ऑफ 10 years, it's certainty that after 5 years the lessor might terminate the contract on their own. Okay. So the lease term for lessee for us will be 5 years. Correct. Right. So this is an assessment. So it depend upon question कि क्या question में कह रहा है. Based on that will account our lease term, lease period. Okay. Okay. This is the accounting chart. बैलेंस शीट में असेट शो होगा, राइट ऑफ यूज एसेट, मतलब एक हेडिंग बन जाएंगी. जैसे वी हैव नॉन करंट असेट ना, तो Hmm. उसी के नॉन करंट असेट के नीचे विल हैव हेडिंग ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट. तो राइट Right. ऑफ यूज एसेट में देयर आर एंटिटीज, देयर आर बिजनेसेस जिसने बहुत सारी एसेट्स लीज पे ली होती है. तो हर एक को लाइन आइटम्स में नहीं दिखाएंगे कि बसेस, ट्रेन, कार्स, एनी कुछ भी वो ऐसे नहीं दिखेंगे. टोटल दिखाएंगे कि लीज राइट ऑफ यूज एसेट करंट ईयर में कितना है, और उसका जो ब्रेकअप होगा वो नोट्स टू अकाउंट में शो करेंगे. डू यू नो व्हाट आर नोट्स टू अकाउंट्स? In the end, we show like Disclosure. yeah, We disclose disclosure. that we have 10 assets in right of use asset. राइट ऑफ यूज एसेट कंप्राइज ऑफ 10 असेट्स, और ये रहा असेट का ब्रेकडाउन कि इसकी इतनी इतनी लायबिलिटी है और ये इतना इतना असेट. Right. करेक्ट. Hmm. तो बैलेंस शीट के अंदर राइट ऑफ यूज एसेट शो होगा. लायबिलिटी में लीज ऑब्लिगेशन होगा, लीज लायबिलिटी इन लायबिलिटी सेक्शन दैट वी लर्न. Hmm. करेक्ट. पीएनएल में दो एक्सपेंस जाएंगे, डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट इज Right. इक्वल टू क्या, टोटल लीज एक्सपेंस. Okay. करेक्ट ना, टोटल लीज एक्सपेंस, ये लीज के वजह से एक्सपेंस आया है. Hmm. नाउ वी लर्न व्हाट कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन लीज. एंड इसमें भी हमें सारी लीज लायबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट सेज इज फॉर 5 ईयर, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज फॉर 5 ईयर, लीज टर्म इज 5 ईयर. Hmm. तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि एनुअली हाउ मच आर वी गोइंग टू पे. फॉर एग्जांपल $1 लाख, वन Okay. लाख डॉलर डे वन, ईयर वन, $1 लाख ईयर टू, $1 लाख ईयर थ्री, ईयर फोर, ईयर फाइव. ठीक है. Hmm. हमें डे वन पे लायबिलिटी बुक करनी है.
तो हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि 5 साल है तो 5 लाख इज आर लाइबिलिटी, नो। हम 5 साल की लाइबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, डिस्काउंट Right. करेंगे। करेक्ट। Hmm. दैट Hmm. इज मोर फेयर प्रेजेंटेशन। Yes. ओके। Measuring the lease liability. Lease liability is equal to present value of unpaid lease payment. Correct. Hmm. Present value of unpaid lease payments. Discounting rate can be anything, या तो इंटरेस्ट रेट होगा, Okay. या तो लेसीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। इसका मतलब अगर मार्केट में आज की तारीख में लेसी वो असेट लेने जाएगा या तो कुछ लोन लेने जाएगा, Hmm. तो उसको बोरिंग रेट क्या पड़ेगा, व्हाट इज द इंटरेस्ट कॉस्ट। हर एक डिस्काउंटिंग का ना लॉजिक है। हम जो डिस्काउंटिंग रेट डीकमीशनिंग कॉस्ट और प्रोविजंस में पढ़ रहे थे, हाँ. डीकमीशनिंग कॉस्ट, तो Yeah. उसमें जो डिस्काउंटिंग फैक्ट रेट था, उसका लॉजिक क्या था कि उसके अंदर इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट इंक्लूसिव है। वो Hmm. रेट जो कैलकुलेट हुआ है उसके अंदर इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट बुक्ड है, क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट भी वैसे ही बढ़ेगा। इंटरेस्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरेस्ट रेट? इंटरेस्ट रेट मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं आज की तारीख में कोई लोन लेने जाता हूँ, पर्सनल लोन फॉर एग्जाम्पल टेकिंग, आज की तारीख में रेट है 14-15% पर्सनल लोन, 15% पे लोन मिलेगा। ठीक है। इन्फ्लेशन अगर फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में 10% है फॉर एग्जाम्पल, और 12% हो गया इन्फ्लेशन, तो क्या Hmm. लगता है बैंक भी अपना इंटरेस्ट बढ़ाएगी, क्योंकि जो इंटरेस्ट हम वी आर पेइंग इट्स इनकम फॉर बैंक। तो इन्फ्लेशन भी बढ़ गया तो Yes. बैंक के लिए भी तो इन्फ्लेशन बढ़ा ना, उनके लिए भी खर्चे बढ़ेंगे अपने जो होंगे एज पर इन्फ्लेशन रेट। तो Hmm. वो भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, वो भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, तो हमारे लिए क्या हो गया, दो चीज बढ़ी, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन। लोन लेना चाहिए. करेक्ट Hmm. है ना। या तो इंटरेस्ट रेट एक्सप्लिसिटली दिया होगा, या तो लेस इज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। करेक्ट है ना। इट्स सेंसिबल ना कि व्हाई आर वी यूजिंग दिस रेट टू डिस्काउंट। करेक्ट। Right. Hmm. टू कन्वर्ट आवर फ्यूचर लीज पेमेंट टू प्रेजेंट वैल्यू। Hmm. Understand. ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट कॉस्ट are going to include in lease payment. Is it only the annual payment which you are doing, or other costs might include? Lease payment. What costs are included in lease? First, fixed payment. Fixed मतलब we decided कि $1 lakh we pay annually. That is fixed payment. Okay. Hmm. Variable lease payment. अगर फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में मार्केट रेट फॉर एग्जाम्पल हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया 12%, अगर Okay. मार्केट में बहुत नेक्स्ट ईयर बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन आ गया, Hmm. रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 15%, तो वेरिएबल हो गया ना लीज पेमेंट। Yes. तो इट डिपेंड अपॉन मार्केट रेट और इंडेक्स। करेक्ट। अगर कुछ ऐसा होता है तो विल चेंज और लीज लाइबिलिटी। ये जो खर्चा Hmm. हमारा 12 से 15 के बीच में आ गया 3% का, दैट विल एड इन आर लीज पेमेंट। Got it. सेम लॉजिक जो हम, इट्स आर कॉस्ट ना, तो उसी हिसाब से हम वी आर गोइंग टू ऐड इन आर लीज पेमेंट। देन रेसिजुअल वैल्यू गारंटी। रेसिजुअल वैल्यू गारंटी मतलब कि आफ्टर 10 years, इफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 10 years, ऑन इन 11th ईयर वी आर पे वी आर बाइंग द एसेट। अब बोल रहे हैं Hmm. नहीं हमको एसेट अच्छा लग गया, हम इसको ही खरीद रहे हैं, Hmm. तो फाइनल पेमेंट जो पे करेंगे दैट इज नोन एज रेसिजुअल वैल्यू गारंटी। द एट अमाउंट लेसी एक्सपेक्ट्स टू पे। Okay. परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज। इफ लेसी रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज at the end at the 11th year, and the lessee is purchasing the asset, तो उसका कॉस्ट। पेमेंट ऑफ टर्मिनेटिंग फॉर एग्जाम्पल
Uh, Contract is for 10 years. We are terminating the contract in between after 8 years, saying no, we do not need this asset now. So कॉन्ट्रैक्ट में वो भी लिखा हुआ क्लॉज कि अगर इफ लेसी इज ब्रेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड then Hmm. certain amount has been paid by lessee or lessor either if either party terminates the contract in between क्योंकि it's a big obligation ना it's not something which is we are playing कि आज बोल दिया कॉन्ट्रैक्ट है कल बोल दिया नहीं है नहीं they are hefty payments Right. has to be made क्योंकि 10-10 साल इतने बड़े बड़े assets की वैल्यू का obligation है we cannot take unseriously करेक्ट Right. Yes. तो अगर लेसर ब्रेक करता है इन बिटवीन he has to pay certain liability certain penalty Hmm. अगर लेसी is breaching the contract in between lessee has to pay the penalty Okay. and the penalty payment is known as payment for terminating termination payment But okay ऐसा जरूरी नहीं कि सारी कॉस्ट एक क्वेश्चन में ऐड होगी नो कुछ कुछ हो सकता है क्वेश्चन इज सेइंग कि मार्केट इंटरेस्ट रेट की वजह से लीज पेमेंट इंक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट ईयर तो यू हैव टू अंडरस्टैंड अच्छा वेरिएबल लीज पेमेंट की बात हो रही है क्वेश्चन इज सेइंग there is a chance that the lessee can breach the contract in between hmm. you have to understand the penalty payment तो ये सब Hmm. याद रखना you have to understand okay Hmm. now what cost are we going to add in right of use asset which is our ultimately what right of use asset is our asset na Yes. और asset में you know what costs are added first जो up front payment करेंगे वो cost में करेक्ट दैट इज लीज लायबिलिटी IAS 16 में जो कॉस्ट हम पे करते थे टू Hmm. परचेज ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लीज लायबिलिटी की Hmm. वजह से हमारे पास राइट ऑफ यूज आ रहा है तो लीज लायबिलिटी इज आर कॉस्ट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी इज आर कॉस्ट प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लाइक पीपी डायरेक्ट कॉस्ट जो भी डायरेक्ट कॉस्ट असेट को फंक्शनल करने के लिए लेस इज इनकरिंग दैट इज गोइंग टू बी एडेड इन ROU करेक्ट जो पीपी में था वी लर्न IAS 16 initial direct Okay. cost, transportation cost, delivery cost, initial direct cost, initial, Yes. 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 करेक्ट प्लस प्री Hmm. पेमेंट अगर कुछ प्री पेमेंट एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं तो हम प्लस रिस्टोर और डिसमेंटल कि हमारी लाइबिलिटी है इस आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इसको डिसमेंटल और रिस्टोर करना तो डीकमिशनिंग कॉस्ट आ जाएगी Hmm. बराबर लेस एनी इंसेंटिव रिसीव्ड अगर कुछ डिस्काउंट मिल गया तो हम रिड्यूस कर देंगे फ्रॉम आवर ROU एसेट Okay. करेक्ट Yes. नाउ लेट्स जंप ऑन टू द क्वेश्चन On 1st Jan 2021, Dynamic entered into 2 years lease with for a lorry. Hmm. The contract contained an option to extend the lease term for further a year 1 साल और इंक्रीज कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब क्या हुआ 3 साल हो गया कॉन्ट्रैक्ट लीज टर्म वी हैव लर्नड Hmm. हियर ना लेस्सी हैज ऑप्शन टू एक्सटेंड और टर्मिनेट यहाँ पे लेस्सी इज थिंकिंग आई एम गोइंग टू एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट लीज पीरियड बाय 1 year Hmm. करेक्ट lorry have a useful life of 10 years lorry का जो asset है lorry lorry is the asset name okay owned by lessor उसकी useful Right. life 10 years है Okay. contract period is not 10 years it's 3 years okay but asset की actual useful life is 10 years Okay. What?
लीज पेमेंट्स आर 10,000 पर ईयर, हर साल 10,000 देंगे फॉर इनिशियल टर्म मीन्स 2 years, and then 15,000 per year for option period. For the third year, lessee is going to pay 15,000 annually. Okay. All payments are due at the end of the year. Means entity is paying at the end of the year, earlier, at the Hmm. last. Hmm. ठीक है? If we are entering into contract on 1st of December, sorry, 1st of Jan, we are going to pay the lease liability, annual lease liability on 31st December at the end. Right. Okay. Right. To obtain the lease, to obtain the lease, Dynamic, which is the lessee, incurs initial Hmm. direct cost of 3,000. Okay. This cost will be added in ROU. Understand? Right Yes. of use. This is the direct cost, initial direct cost which lessee has incurred, okay, Hmm. to bring the asset in functional condition. Okay. The interest rate which the lease is not determinable, readily determinable. So dynamic incremental rate of borrowing is 5%. Agar interest rate is not determinable, we'll use incremental rate of borrowing, which is given in the question. It is 5 years, 5%. Okay. Hmm. What the question is saying, calculate initial carrying amount of lease liability and right of use asset both, and provide double entries needed to record this amount in Dynamics financial record. हमें इनिशियली देखना है कि डे वन पे जब हम लीज आईएफआरएस में एंटर हुए, हमारी लीज लाइबिलिटी और आरओयू क्या है, दैट्स इट. Right. रिपोर्टिंग डेट पे क्या है, क्या सीन है, कितना डेप्रिसिएशन है, कितना इंटरेस्ट है, दैट हैज नॉट बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन. ओके. Okay. इनिशियल कैरिंग अमाउंट चाहिए उसको, इनिशियल. इसका मतलब Hmm. डे वन पे क्या है. जस्ट गिव मी अ मिनट जस्ट. Yes. Hello, hello. Yes. Yeah. So let's try to solve this question. Initial Hmm. carrying amount. We have learned that what is lease liability. Lease liability is equal to present value of future lease payment. Right. Correct? And in ROU asset, what is the cost which we add? Lease payment, which is present value of lease payment. Hmm. Direct cost, Indirect decommissioning cost. cost, incentive Yes. received, etc., etc., etc. But in Hmm. question, lease payment and direct cost is there. Hmm. Okay, Hmm. let's go ahead. How many year discounting factor 3 years. payment? Okay, one, two, three. Hmm. 10,000. लास्ट ईयर कितना है? 15.
Discounting factor. What is the rate? 5. 1 divided by 1.05. Correct? Right. Into year. Year. Okay. This is the discounting factor. What is the present value of cash flow? This into इसका मतलब जो मैं पेमेंट नेक्स्ट ईयर करूंगा 10,000 उसकी आज की तारीख में उसकी वैल्यू है 9523 प्रेजेंट Okay. वैल्यू। Hmm. 2 इयर्स का आज डिस्काउंट किया वैल्यू आई 9070 और 3 इयर्स का 50,000 का डिस्काउंट किया तो आज की तारीख में 15,000 की वैल्यू 13,000 ही है 12957। Right. ओके तो व्हाट इज द टोटल ऑफ लीज पेमेंट? 31,551। ओके 31,552 अप्रॉक्स। Hmm. So this is the initial carrying amount of lease liability on day one, correct? Hmm. तो एल एल क्या हो गया? लीज लाइबिलिटी। दिस अब आरओयू कैलकुलेट करना है। व्हाट इज आरओयू? आरओयू के अंदर व्हाट कॉस्ट टू बी इंक्लूड? एल एल लीज लाइबिलिटी In डायरेक्ट direct cost. लीज लाइबिलिटी डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 3,000 टोटल 3452, Hmm. correct? What is the Yes. journal? And question is asking for double entries, which is journal entry. तो journal entry क्या होगा? डेबिट क्या होगा? ROU. What is ROU? 34. Credit is what? Lease liability. How much? And now you know the journal entry needs to be balanced. तो डिफरेंस Yes. कितना आ रहा है यहाँ पे? 3,000 का। 3,000. और वो Yes. क्या है? वो Direct cost. डायरेक्ट कॉस्ट, बट वो तो हमने पे किया ना, तो कैश गोज आउट हाँ. Right. 3,000, करेक्ट? Hmm. So this is the double entry on day one, and this is the initial carrying amount. So initial carrying amount of ROU will be 34,552, lease liability is 31,552, and cash is 3,000. Okay. Yes. Okay. Now subsequent measurement. What do you mean by subsequent measurement? At the year end क्या measurement होगा? करेक्ट। अभी तक तो हमने ये क्या वैल्यू है, डे वन मतलब जिस दिन लीज में एंटर हुआ है ऑन, Hmm. ये सब कैलकुलेशन कब का है? फॉर जैन फर्स्ट 20x1। अब Hmm. सब्सिक्वेंट मेजरमेंट सीखना है तो व्हाट व्हाट आर वी लर्निंग कि 31 दिसंबर 20x1 में क्या होगा, करेक्ट? Hmm. एंड सो ऑन, मतलब ऑन रिपोर्टिंग डे सब्सिक्वेंटली, बट सो ऑन भी कब तक? टिल लीज पीरियड। ओके subsequent measurement. You know that on in subsequent measurement Hmm. we have to book two things in P&L. First is interest cost, Second is depreciation. second is depreciation. So this is the interest expense debit, credit lease liability. Hmm. Carrying amount will be reduced. Carrying amount, then carrying amount of lease liability will be reduced by lease cash payment. क्यों? क्योंकि जब हम on day one we haven't paid this 10,000 yet.
ये 10,000 हमने डे वन पे पे नहीं किया है, ये हम कब पे करेंगे? 31 दिसंबर को पे करेंगे। तो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि द कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी इज reduced बाय कैश रीपेमेंट। हमने 10, हमारा ऑब्लिगेशन डे वन पे कितना था? 31,552। तो इसमें से भी ऑलरेडी पेड 10,000, करेक्ट? तो लीज लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। लीज लाइबिलिटी 31,000 है, 10,000 हमने पे कर Hmm. दिया, तो लीज लाइबिलिटी रिड्यूस होगी। Yes. So that's what they are saying. The carrying amount of lease liability, which is 31,552, carrying amount on day one is reduced by cash repayment. तो रिड्यूस की एंट्री क्या होगी? हमने कैश पे किया और लाइबिलिटी रिड्यूस हुई। लाइबिलिटी होती है क्रेडिट, फिर रिड्यूस करने के लिए भी डेबिट एडिट, डेबिट लाइज लाइबिलिटी क्रेडिट कैश, क्योंकि हमने 10,000 पे किया। Hmm. करेक्ट? Yes. तो दिस आर दी, दिस इज द प्रोफोमा बेसिकली, कि क्या क्या हो रहा है। इफ यू आर पेइंग इन अरियर्स, अरियर्स मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर, Hmm. ठीक है? तो क्या हुआ? बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड कितना था? 31। इसको इसी को ही लेके चलता है, लेट्स टेक दिस। डे वन कितना था? 31,552। दिस इज बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ओके, इंटरेस्ट पेमेंट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो नेक्स्ट ईयर होगा, और नेक्स्ट ईयर का फिर वो क्या हो जाएगा? ओपनिंग। करेक्ट? Hmm. इंटरेस्ट कॉस्ट क्या है करंट क्वेश्चन में? दिस इंटू 5%। ओके, हमने कितना पे किया? 10,000। तो लास्ट एट द एंड रिपोर्टिंग डेट में क्या वैल्यू बची? 29,129। दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस। Right. करेक्ट? ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा? ओपनिंग। Opening. ओके, ईयर टू पे Hmm. सेम हम वही करेंगे जो यहाँ पे किया था। और यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों कम हो गया? क्योंकि प्रिंसिपल पेमेंट भी तो कम हो गया ना, प्रिंसिपल भी तो कम हो गया, तो इंटरेस्ट भी तो कम हो जाएगा। पहले लाइबिलिटी थी 31,000 पे, उस पर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अब लाइबिलिटी है 23,000, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 5% का। Hmm. Hmm. ठीक है, तो अब ईयर थ्री पे क्या लाइबिलिटी बची? 14,000। करेक्ट? Hmm. हमारा ईयर थ्री भी है, दिस इंटू 5% माइनस 15,000। जीरो हो गया एग्जैक्ट। Hmm. Hmm. 14,000 की लाइबिलिटी, इंटरेस्ट ऐड किया 700 का। क्यों? 14,000 पे इंक्रीमेंटल रेट ऑफ बोरिंग 15,000 पे करना था। तो ईयर थ्री पे, क्योंकि दिस इज द ऑप्शन पीरियड, द एक्चुअल लीज पीरियड फॉर 2 इयर्स, बट हमने सोचा कि विल एक्सटेंड द लीज पीरियड बाय 1 ईयर। बट लास्ट ईयर हमको 15,000 पे करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने पे किया 15,000, हमारी लाइबिलिटी हो गई जीरो। अंडरस्टैंड? हेलो? Yes. Yes. चलो. पक्का? हाँ हाँ. तो दिस इज द एडजस्टमेंट, दिस इज द वे वी डू। जस्ट Yes.
Yeah. This is the way we calculate if the payments are in arrears, which means in at the end of the year. Hmm. What if the payment are being made in advance? In advance, मतलब, on the day we entered into a contract. For Hmm. example, in our case, it was 1st of Jan. On Right. 1st of Jan itself, what we are doing, we are paying the rent lease payment of for 1 year, first year in advance, Hmm. and second year in advance, third year in advance. Okay, Okay. मतलब फर्स्ट ऑफ जैन को ही पूरे साल का पे कर दे रहे Hmm. हैं. हमने अभी 10,000 को डिस्काउंट क्यों किया? 10,000 को क्योंकि हम आज हम खड़े हुए हैं वेयर वी आर. हमको इनिशियल कैरिंग अमाउंट चाहिए था ऑन 1st of Jan. हम Hmm. लीज पेमेंट कब पे कर रहे थे? 31 दिसंबर, मतलब 12 मंथ्स के बाद. इसलिए हमने Right. 10,000 को भी इनिशियली डिस्काउंट किया इसको. अदरवाइज वी Okay. वोंट हैव डन दिस. क्योंकि अगर फर्स्ट डे को ही पे हो जा रही है तो उसको डिस्काउंट क्यों करना? कि फर्स्ट डे इज इक्वल टू क्या? पेमेंट इज इक्वल टू द करंट लायबिलिटी, प्रेजेंट वैल्यू. Hmm. जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसी Hmm. दिन वही प्रेजेंट वैल्यू होगी. जैसे Hmm. टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम गुजरेगा तभी वैल्यू रुपी डिक्रीज होगा. Right. करेक्ट. इसलिए हमने उस टाइम पे डिस्काउंट किया 10,000 को भी. बट अगर हम एनुअल अरियर्स में पे कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी लीज लायबिलिटी कितनी होती है उस टाइम पे? उस टाइम पे हमने 10,000 को डिस्काउंट किया ही नहीं होता. मतलब If टेन you थाउजेंड have को paid on first January. हाँ, क्योंकि 1st जनवरी को पे किया ना, तो उस टाइम पे हमारी फर्स्ट ऑफ जनवरी को हमारी पेमेंट जो 10,000 है, विच इज इक्विवेलेंट टू आवर कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू, Hmm. उसी दिन वो प्रेजेंट वैल्यू वही होती. करेक्ट. Right. Hmm. फिर इसको कब पे करते हैं? इसको पे किया 1st of Jan, Hmm. 20x1. फिर इसको कब पे किया? सेकेंड वाली को एडवांस में, सेकेंड ईयर के, बट सेकेंड ईयर में. करेक्ट. Right. थर्ड को कब पे करेंगे? इन एडवांस बट 1st Jan 20x3. करेक्ट. Hmm. तो Hmm. इफ यू आर स्टैंडिंग एट 1st of Jan, तो ये तो हमारे लिए ईयर वन नहीं हुआ अभी तक. एक ही साल हुआ ना. हाँ. तो ये हमारा ईयर जीरो हो जाएगा उस टाइम पे. ये ईयर वन एंड ईयर टू. लॉजिक समझ आया? Year खत्म नहीं हुआ है ना. We are standing on first January on the first date. हाँ, तो फर्स्ट डेट तो हम डिस्काउंट करेंगे तो एक साल का करेंगे ना, तो एक साल क्या कहाँ हो रहा है? हम पेमेंट ही एक साल में कर रहे हैं. ऑल्दो Right. पेमेंट सेकंड ईयर की है, बट पेमेंट तो एक साल में ही कर रहे हैं, तो डिस्काउंट तो एक साल का ही करेंगे, 2 साल का थोड़ी डिस्काउंट करेंगे. Right. करेक्ट. तो तो पर हमारी वो फर्स्ट जो पे इन एडवांस किया है फर्स्ट जनवरी फर्स्ट ईयर में, हम्म, उसका क्या? उसको नहीं डिस्काउंट करेंगे ना, तो वो हमारी जो प्रेजेंट, हमको क्या चाहिए? लीज लीज लायबिलिटी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू. हाँ. तो मैं वही बता रहा हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं. हम्म. अगर हम आरईएस में पे कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट पेमेंट ही वन होगा, ईयर वन, क्योंकि हम ईयर के एंड पे करेंगे. राइट. करेक्ट. अगर एडवांस में पे कर रहे हैं राइट. तो दैट द फर्स्ट पेमेंट बी जीरो, नॉट ईयर वन. ओके. हाँ. करेक्ट. क्योंकि गॉट इट. उस टाइम पे 10,000 जो पे किया, विच इज इक्विवेलेंट टू 10,000, प्रेजेंट वैल्यू भी उस टाइम पे उसकी 10,000 ही थी. आज मैं हम्म. कोई लैपटॉप परचेस कर रहा हूँ 5,000 का, तो आज की तारीख में उसकी वैल्यू 5,000 ही है, बट एक साल बाद, 2 साल बाद वो 5,000 का 3,000 होगा. राइट. अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड. तो वही चीज है. तो इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होगा? सेकंड का 10,000 का 9,523, और थर्ड का 15,000 का होगा 13,000. क्यों? क्योंकि हमने 2 साल का डिस्काउंट किया, तो पेमेंट थर्ड ईयर की है, बट 2 साल में ही कर रहे हम्म. हैं. हम्म. ओके. तो हमारा टोटल लीज लायबिलिटी कितना बन गया? 33. 33 हो गया ना, क्योंकि पहले डिस्काउंट किया था 10,000 को भी, अब डिस्काउंट 10,000 को नहीं किया, तो डिफरेंस आ गया. हाँ. राइट. तो अब लीज लायबिलिटी इज 33,129. हम्म. सेम आरओयू में भी चेंज आएगा, क्योंकि लीज लायबिलिटी चेंज हो गई, तो आरओयू में भी लीज लायबिलिटी आती है, यस. तो वो भी चेंज हो गया, तो 36,129 हो गया. हम्म. सेम एंट्री क्या हो जाएगी? डेबिट आरओयू 36,129, लीज लायबिलिटी 33,129, बट दोनों का डिफरेंस इज व्हाट? ये तो डायरेक्ट कॉस्ट हम 1st of Jan को ही पे करें पर कर रहे हैं.
इसलिए हम इसको हम्म। भी डिस्काउंट नहीं कर रहे हैं। ओके। अंडरस्टैंड? अगर क्वेश्चन में बट बोला होता अगर क्वेश्चन में बोला होता कि ईयर 2 में हम 10,000 भी पे कर रहे हैं प्लस कुछ वेरिएबल कंपोनेंट भी पे कर रहे हैं एज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग इंडेक्स रेट और मार्केट रेट के हिसाब से, तो हम वो हम्म। पेमेंट भी डिस्काउंट करते हैं 1 साल का। ओके। लॉजिक समझ आ रहा है? वी आर पेइंग समथिंग इन आफ्टर 1 ईयर, तो टोटल जितना भी हम्म। पे करेंगे सब कुछ प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट होगा। हाँ। एंड एज पर IFRS 6, लीज लाइबिलिटीज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो पेमेंट, ऑल फ्यूचर कैश फ्लो पेमेंट, ऑल। और ऑल में क्या क्या आता है लीज लाइबिलिटी में? ऑल दिस इज इंक्लूडेड: वेरिएबल लीज पेमेंट, रेसिजुअल, परचेज ऑप्शन, टर्मिनेटिंग, अगर कुछ पेनल्टी पे कर रहे हैं तो वो भी। फॉर एग्जाम्पल 5th ईयर में 50,000 की जगह वी आर सेइंग कि अगर हम टर्मिनेट कर देते हैं तो यहाँ पे हम 20,000 पे करेंगे, 10,000 पेनल्टी, तो ये भी हम्म। डिस्काउंट हो गया। ओके। अंडरस्टूड? ओके। बस बाकी जैसे ही अब तो ठीक है, एक बारी डिस्काउंट कर दिया, आरियर्स और हम्म। पेमेंट एडवांस में डिस्काउंटिंग की चीज, जो चीज है दैट इज डिफरेंट, बाकी सब सेम है। अब जैसे ही कैलकुलेट किया प्रेजेंट वैल्यू, सेम एडवांस में भी यही चीज है। अब लीज लाइबिलिटी क्या है? 33। पहले क्या थी? सॉरी, यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेटेड आ गया ना, फॉर्मूला लिंक है इसके। 33 इंटरेस्ट लेस पेमेंट ऑन ईयर 1। यस। अब एक और लॉजिक, जब हम पेमेंट इन अरियर्स एडवांस में है, हम्म। तो इंटरेस्ट कंपोनेंट कब आएगा? एट द एंड ऑफ द ईयर ना, इंटरेस्ट कंपोनेंट। मतलब 31st जैन को पे किया, 1st ऑफ जैन फर्स्ट को, टाइम। 1st जैन को, हाँ। 1st जैन को हाँ। हमने लीज पे कर दिया, तो वो हाँ। 10,000 पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा ना, या इंटरेस्ट लगेगा डायरेक्टली दूसरे पेमेंट पे। राइट। इंटरेस्ट एनुअल होता है ना, ये जो 5% है इंटरेस्ट दैट इज एनुअल, बट हम फर्स्ट पेमेंट तो उसी टाइम पे कर दे रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर हम्म। में इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं आएगा। हम्म। सेकेंड ईयर में जैसे ही 23 हुआ, अब उस पे इंटरेस्ट कंपोनेंट भी आ जाएगा 5%। टेन राइट। थाउजेंड हम उस टाइम पे भी पे कर रहे हैं, 14,000, 14,000 पे इंटरेस्ट कॉस्ट आई 7 7 14, फिर 15,000 पे किया, नेट लाइबिलिटी जीरो। दिस इज द डिफरेंस हाउ वी कैलकुलेट इफ द पेमेंट आर इन मेड अरियर्स और एडवांस। क्वेश्चन में लिखा होगा पेमेंट्स आर मेड इन अरियर्स और एडवांस, तो ध्यान रखना कि कैलकुलेट कैसे करना है। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त मेक श्योर करना कि जो 10,000 वो फर्स्ट डे को पे कर रहे थे, तो दैट ईयर विल बी जीरो, नेक्स्ट पेमेंट इज ईयर 1, नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेमेंट इज ईयर 2। अंडरस्टैंड? बट अगर हाँ। अरियर्स में पे कर रहे हैं तो फर्स्ट पेमेंट ही हम साल के एंड पे कर रहे हैं, तो दैट इज आर ईयर 1, क्योंकि हम उसको भी डिस्काउंट करेंगे। 1 साल का डिफरेंस आ गया, टाइम टाइम गैप। हम्म। तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, तो फर्स्ट पेमेंट इज ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। और एडवांस में फर्स्ट पेमेंट इज जीरो, देन ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। डन? गॉट इट। ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। Riyadh enters into agreement to lease an asset. Okay. The terms of lease are: primary period is 4 years from 1st of Jan 20x2 with a rental payable of 2,000 per annum, PA per annum, payable on 1st December to each year. तो ये अरियर्स है कि एडवांस है? अरियर्स है। अरियर्स है। अरियर्स ओके। है। सेकंड इज प्रेजेंट वैल्यू। चलो, ये भी टेंशन खत्म हो गई, प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन, हम्म। तो हमें कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में दिया हुआ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इज 55710 and ओके। interest rate is 15% which is given. हम्म। Okay.
Question is saying what figures will be shown in financial statement for year ended 31st December 2022. इसका मतलब क्या हुआ? सब्सिक्वेंट की अकाउंटिंग पूछ रहे हैं क्योंकि इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ ही है 5710। हाँ करेक्ट। तो सिर्फ मेरे को एक एंट्री बताना कि एंट्री सिर्फ जो डे वन पे एंट्री होती है वो क्या है? डेबिट, आर यू क्रेडिट, क्या अमाउंट आएगी? 5710 आरओयू में भी लीज सेम लीज पेमेंट ही क्यों है? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट नहीं दिया है। डायरेक्ट कॉस्ट और बाकी सब कॉस्ट नहीं दी हुई है, तो लीज पेमेंट इज नहीं इक्वल दिया टू है। आरओयू। हाँ परफेक्ट। एंड टू यही परफेक्ट। आएगा फिर कैश अब फ्लो। हाँ, करेक्ट करेक्ट। अब और कोई कैश हम्म पेमेंट किया नहीं है, कैश जो पेमेंट होगा वो हम 2000 करेंगे ईयर एंड पे। हम्म करेक्ट। तो अब आते हैं सब्सिक्वेंट पीरियड, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। हम्म सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का प्रोफॉर्मा है ये। For 10 to 12 question you will need to use this proforma, but after you have solved sufficient question ना, तो ये implied हो जाएगा दिमाग में, embedded हो जाएगा कि ये ऐसे ही सॉल्व करना है। तो इजीली कैलसी से भी हो जाएगा फटाफट। 5710, इंटरेस्ट कितना हम्म परसेंट है? 15%। पेमेंट कितना कर रहे हैं? माइनस एट द ईयर क्या क्लोजिंग बैलेंस बचा? 4566। करेक्ट। यस। क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ तक ही पूछा है दिसंबर 20x2 तक। तो बस हमें हमको पता लग गया एंट्री क्या बनी। अब इसकी डेबिट इंटरेस्ट, क्रेडिट लीज लाइबिलिटी, क्योंकि इंटरेस्ट कम हुआ है प्लस हुआ है ना। हाँ करेक्ट। पेमेंट का क्या एंट्री होगी? वी आर reducing the liability, so the liability would be debited. Credit would be what? We are paying na कैश। cash. Sorry, 2000। अब एक और चीज ऐड हो रही है, आई वांट यू टू पिक दैट थिंग। लीज लाइबिलिटी का तो हमने कर दिया, और क्या मिस कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन। यस, डेप्रिसिएशन, यस यस। तो डेप्रिसिएशन, हाउ मच डेप्रिसिएशन? डेबिट डेप्रिसिएशन, क्रेडिट व्हाट? कैश। व्हाई कैश? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैश ट्रांजैक्शन है? डेप्रिसिएशन पे करता है कोई, कि डेप्रिसिएशन नहीं नॉन कैश नहीं। ट्रांजैक्शन है? डेप्रिसिएशन कभी कोई पे नहीं करता ना, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है। क्रेडिट आरओयू ना, अच्छा। असेट, हाँ असेट का जनरल एंट्री, डेबिट असेट, क्रेडिट डेबिट एक्सपेंड, डेप्रिसिएशन क्रेडिट असेट, असेट की वैल्यू कम हो जाएगी ना उससे। राइट राइट। तो 5710 डिवाइड बाय हाउ मच ईयर? फॉर 4 years, राइट? या 4 years। तो डेप्रिसिएशन वुड बी फॉर 4 years। तो टोटल charge in P&L would be how much? 2000 Depreciation plus interest on 2284. 228। Correct? राइट। Let's see the solution. सोल्यूशन में उन्होंने क्या किया हुआ है, पूरा कैलकुलेट कर लिया 205 तक का। बट हमें तो क्वेश्चन में 202 तक ही पूछा था, तो इसलिए हमने वहां तक ही कैलकुलेट किया। हम्म ठीक है। सेम डेप्रिसिएशन 1428 1427 अप्रोक्सीमेशन में विल गेट।
ओके, Hmm. 856.5 the interest part, 857। ये तो पीएनएल का पार्ट हो गया। बैलेंस शीट में क्या दिखेगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस? लीज लायबिलिटी दिखेगा 4566 पे, करेक्ट? Yes. And liability. लीज लायबिलिटी तो दिख रहा है ना। हाँ. और असेट किस किस पे दिखेगा? 4566. लीज माइनस 4283 ना, राइट? Yes. ओके, तीन चीज याद रखनी है, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, और बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट आएगा, और पीएनएल है, चार। Hmm. इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन आ गया, इसका मतलब थर्ड फिफ्थ लास्ट चीज इज यू गॉट कि पीएनएल में क्या इम्पैक्ट आएगा। बैलेंस शीट में कैसे पता लगेगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लीज पेमेंट जो हमने प्रोफोर्मा बना के कैलकुलेट किया। Hmm. एंड हाउ डू वी गेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट? reduce the depreciation. Minus depreciation. Right. So this is the bifurcation. Non-current asset 4282, 4283 that we got. लीज लायबिलिटी में इन्होंने बाइफरकेट किया हुआ है करंट और नॉन करंट में। अगर इफ यू टोटल ना, टोटल 3252 प्लस 1315, तो Hmm. 4667 4567 ही आएगा टोटल लीज लायबिलिटी, सेम एज आर, बट बाइफरकेट किया हुआ है। अब बाइफरकेट कैसे करते हैं? वी लर्न, सी। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी? I've already The, explained this concept in government grant, if you remember. the But amount of period that we hold that asset. no, yeah, period. So if the asset, when do we conclude that this is a non-current liability or current liability? When do we conclude this? For more than 12 months is non-current and Correct, within the correct, 12 months is current. correct। For तो the यहाँ, first year, so यहाँ पे closing balance is 4566.5 है, but hmm, but this is the opening. Same will reduce the interest part after 12 months. hmm, After 12 months, what is the situation? Let's see. This is the closing, opening of next year. Same interest calculation. क्या होगा? See, year one, year we are standing at this place, year one। hmm, hmm, हमें चाहिए करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी। तो hmm. ये लाइबिलिटी 1315 की लाइबिलिटी है, इज गोइंग टू बी पेड इन विद इन 12 मंथ, विद इन No, 12 मंथ्स ना, क्योंकि ईयर टू, ईयर वन मतलब हम क्या खड़े 31 दिसंबर 20x1, ईयर टू मतलब हाँ, क्या हुआ 31 दिसंबर 20x2, मतलब विद इन 12 मंथ हमें कितना पे करेंगे लाइबिलिटी? एक तो इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट एंड द लाइबिलिटी, yeah, करेक्ट? So 1315 is our current liability. We are paying that liability within 1 year. hmm, करेक्ट? yes, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे 4567, 4567 माइनस 3252, hmm, और 3252 का डिफरेंस क्या है? 2000 और 684। right, परफेक्ट। hmm. और नॉन करंट क्या हो गया? अगर Year विद इन 12 मंथ में मेरी लाइबिलिटी अगर 3251 है, तो आफ्टर 12 मंथ मतलब मैं ईयर वन पे खड़ा हूँ, ईयर टू मतलब विद इन 12 मंथ्स आ गया, इसका मतलब इसका जो डिफरेंस है वो मेरा करंट लाइबिलिटी है। yes, तो इसका मतलब ईयर टू और ईयर थ्री जो मोर देन 12 मंथ्स हो जाएगा उसका डिफरेंस मेरा नॉन करंट लाइबिलिटी। हाँ, करेक्ट?
This is the liability which we are going to pay in future. 3251 में से 1315 द करंट लायबिलिटी जो 12 मंथ में होगा, बट ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो फ्यूचर में पे होगा ना, फ्यूचर 12 मंथ। Yes. करेक्ट। तो वही है। तो 3251 इधर नॉन करंट लायबिलिटी, और डिफरेंस ऑफ बोथ दिस माइनस द करंट लायबिलिटी। लेट मी पुट चेंज करना। ओके। तो अगर आप टोटल भी करोगे यू विल गेट द सेम आंसर 4566 विच इज दिस। इसका मतलब क्या हुआ? 4566 में से 1315 is my current liability and 3251 is my non-current. Understood? Yes. और ये क्वेश्चन में आएगा, you you might be asked कि do not show the carrying amount and all. Just tell us simply what is the current liability, non-current liability. उसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए you have to prepare this entire perform entire working. The difference between year one and year two is current liability, but हाँ, तो the इसका डिफरेंस three ये है to ना, nine, ट्राई one टू three अंडरस्टैंड one ना। five. I'll explain you. I know where you are confusing. TL and NCL, current and non-current liability. Within 12 months, more than 12. Okay. Within 12 months, कम क्लियरली यहाँ से शो हो रहा है within 12 months। ये था at year one we are standing at 31 Hmm. within 12 months ये liability पे हो रही है, वर्किंग से पता लग रहा है ना, 684 और 2000। Yes. करेक्ट। Huh. सो अगर 5456 में से 1315 मेरी करंट लायबिलिटी है, तो नॉन करंट कितनी है? 3251 विच इज सेम। लॉजिक लॉजिक समझता क्या हो रहा है? ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है भाई, 3251 इज माई क्लोजिंग बैलेंस। इसका मतलब कि Hmm. दिस इज गोइंग टू बी पेड इन नेक्स्ट 3 इयर्स। अंडरस्टूड? इसके बीच Hmm. का जो डिफरेंस है ईयर वन ईयर टू, वो हमारा नॉन करंट होगा शॉर्ट टर्म, क्योंकि इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट वी हैव पेड इन विद इन 12 मंथ्स। अब 3251 है, वी आर गोइंग टू पे इन नेक्स्ट 3 इयर्स, क्योंकि लायबिलिटी लीज टर्म इज फॉर 4 इयर्स। Hmm. करेक्ट। तो थ्री टू Hmm. फाइव वन 4 इयर्स में पे होगा विच इज मोर देन 12 मंथ। तो 3251 इज ए नॉन करंट लायबिलिटी एट ईयर वन। जब ईयर टू पे आएंगे तो 71739 विल बी आर नॉन करंट लायबिलिटी, और डिफरेंस ऑफ बोथ विल बी आर करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये पे हो रहा है यहाँ पे ईयर टू। तो ईयर टू में 1500 विल बी आर करंट लायबिलिटी, 1513. 1513 भी आर 1500, एंड 1739 विल बी आर नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि अब इफ यू आर शेयरिंग एट ईयर टू, तो 1739 is the closing balance which are we closing balance of lease liability which are we going to pay in next 2 years, क्योंकि 2 years है already left left with 2 years, 2 more years, Yes. Yes. correct, which is more than 12 months. Hmm. Yeah. Hmm. Understood. Understood. Now understood. This is the test to understanding 2, which is the continuation of same question which we are doing currently. Dynamics continue. This question follows on previous test to understanding, which is test to understanding 1. Hmm. उसमें पूछा है, लास्ट तो पूछा था हियर, सॉरी, जस्ट टू अंडरस्टैंडिंग वन, दिस वन डायनामिक। हियर वी Hmm. वर जस्ट आस्क्ड द इनिशियल कैरिंग अमाउंट। Yes. नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग prepare the extract from dynamics financial statement in respect of lease agreement for the year ended 31st December 20x1.
कैरिंग अमाउंट हमने 1 Jan 20x1 पे निकाली थी. Question is हम्म. asking what will the closing balance of 31st December 20x1. I want you to calculate, give me closing balance of ROU, lease liability, what total expense which are going to be charged in P&L, and the journal entry. Four things I want from you. Journal entry, Okay. and I think you know everything. These are the journal entry: interest cost, cash that we are paying annually, depreciation, everything. Yes. Okay, go ahead. It's 12:30. You have time till 12:35. Mm-hmm. Done.
One second. I just have one question Mm-hmm. that the interest expense, as per the question, the contract is for 2 years lease, Mm-hmm. but it's also extended for 1 year. So interest will be charged for only 2 year or 3 years. Third year, na? Now forget about 2 years. If the entity is saying that we have increased the lease period, so the total lease period is itself 3 years, not 2 years. Okay. One second. And whenever the useful life of asset given, na, Hmm. do not use that. Use the lease period because we always use lower of lease period and useful life of the asset. See the logic if there are two scenarios. One second. Can you please explain? Yeah, I think I'm done. What is the closing balance? Can I start with first SOPL? Mm-hmm. The depreciation charge for first year is 11517 and J for it is depreciation to ROU. Okay. Then we have interest cost. Interest expense for first year is 1578, which is a 31552 Perfect. into Perfect. 5%. Mm-hmm. And the SOSP closing balance for non-current asset is 23035 Mm-hmm. cost minus depreciation. Perfect. And lease liability. I need lease liability in bifurcation, CL and non-CL. Current liability, non-current liability. For the first year, it is just a second. Mm-hmm.
Non, yeah. For the current liability, it's 8843 Hmm. and non-current is 14287. Perfect. The difference is at 31st 12 H2, which is the 10,000 minus interest rate, which is 8843, that is current liability, and the Perfect. remaining is 14287. Perfect. This is a solution. I think you did this way. Yeah. Okay. Perfect. One more concept. Useful life. If the question says useful life, whenever we get useful life, now, so see, Hmm. what we are doing currently, we are depreciating our ROU based upon its useful life. Hmm. बट जब क्वेश्चन में दो चीज दी होती है, लीज Hmm. पीरियड इज 5 years फॉर एग्जाम्पल, और Hmm. एक्चुअल यूजफुल लाइफ ऑफ दैट असेट इज 8 years, मतलब 8 years में से वी आर यूजिंग 5 years, ऐसे समझ लो. Right. करेक्ट. तो हमेशा लोअर ऑफ दिस टू विल बी यूज एज यूजफुल लाइफ बाय कैलकुलेटिंग ROU का डेप्रिसिएशन. Okay. बिकॉज हमने क्या बुक किया हुआ अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, ROU असेट. तो ROU क्या है, लीज पीरियड का असेट है ना. तो लीज टर्म ही 5 years है, तो फिर बुक 8 years पे हिसाब से डेप्रिसिएशन की कैलकुलेट करेंगे. डोंट गेट कंफ्यूज इस टाइम पे, अगर क्वेश्चन में Hmm. दोनों चीज दी हो तो दी होगी तो. Okay. सही है ना. Yeah. इफ आई रिवर्स द सिनेरियो, इफ आई से दैट द लीज पीरियड is 8 years and the actual useful life of asset is 5 years. Although this is a very rare case, but अगर हुआ तो what you will do? Five actual useful life. Logic. Lower of both. Lower of both, that is ठीक है, that is the क्या कहते हैं, rule that has been defined by IFRS 16. But logic ये है कि actual asset life ही 4 years 5 years है, तो आप 8 years के हिसाब से डेप्रिशिएट कैसे कर सकते हो, यूजफुल लाइफ 8 year हाँ. कैसे मान सकते हो. Right. करेक्ट. Hmm. पहले केस में तो 8 years was the useful life और लीज पीरियड was 5 years, इसलिए भी Hmm. डेप्रिसिएशन ओनली फॉर 5 years. अंडरस्टूड. दिस Hmm. इज द लॉजिक. I think in question illustration 1 there was, yeah, lorries have useful life of 10 years. The actual asset useful life is for 10 years, but lease period is was only for 2 years Hmm. and extended to one more year, which is 3 years. So it's Hmm. still lower than the useful life of the asset. Hmm. Correct. That's why we chose 3 years. We calculate 3 years as useful life. That's it. Okay. Now we will be learning low value asset. In the beginning of the chapter, you just told me the accounting of low value asset. Do you remember? Hmm. Hmm. For low value asset and low value short life of short lease period of assets, IFRS 16 gives guidance is that don't, you know, come into the technicalities, ROU, lease payment, interest, depreciation, ROU depreciation. Don't come into this. Simply book debit, rent, expense, credit, rental, payable, which is liability. No present value, no nothing. Okay, but only for short life asset and low value asset. See, standard hasn't defined कि short life क्या होता है और low value asset क्या होता है. But if you could, judge, use your professional judgment. Short life usually मतलब होता है less than 12 months. Hmm. Correct? क्योंकि अगर more than 12 months हो गया तो will come into IFRS 16. The short life is for less than 12 months, and low value hasn't defined by standard, but our book publishing is saying 5,000, and as a guide, they are also saying as a guide. IFRS 16 does not specify a particular monetary amount below which asset could be considered low value. Although
The basis for conclusion indicates a value of $5,000 as a guide, just for guide. Okay. एग्जाम्पल्स क्या है? टैबलेट रिलीज पे लिया, स्मॉल कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर, टेलीफोन ले लिया, स्मॉल आइटम्स ऑफ फर्नीचर्स. ओके. Hmm. The assessment of whether an asset qualified as having low value must be based on its value when new. Therefore, a car would not qualify as low value asset even if it was very old at the commencement of the lease. क्या समझ आया? Even if it's a third hand car which Hmm. we are giving on lease, but उस कार की ब्रांड न्यू कंडीशन में क्या वैल्यू होती है वो कंसीडर करेंगे, rather than कि उसकी थर्ड एंड प्राइस क्या होगी, सेकंड हैंड प्राइस क्या होगी. Okay. क्योंकि वरना लूफॉल ढूंढ लेंगे ना. एवरीवन विल से कि ये तो सेकंड हैंड की इसकी वैल्यू इतनी है, तो इट्स कमिंग अंडर लो वैल्यू असेट एंड इट्स एन एक्सेप्शन गिवन बाय IFRS 16 की डोंट कम इनटू टेक्निकलिटीज, ये सब मत करो, सीधा रेंट एक्सपेंस क्रेडिट एंड पेबल बुक करो, खत्म. Hmm. So what the standard is saying, the assessment of whether an asset qualifies as having low value must be made on its value when new. जब न्यू होती है उसको क्या वैल्यू. Right. Therefore, a car could not qualify as a low value asset. क्यों? क्योंकि even if it's very old, but उसकी न्यू की प्राइस देखेंगे तो it will be more than $5,000 as a guide which we given by Kaplan published. Correct. So it won't come under low value asset. Now, what if we enter into lease in mid-year? अभी तक तो हम ईयर के स्टार्टिंग में ही लीज अग्रीमेंट में एंटर हो रहे थे. Hmm. What if the period is 1st of Jan and 31st December and we are entering into lease on 1st of October, 1st of September, 1st of June? Okay. तो क्या लॉजिक कहता है आपका? सिंपली डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट रेट प्रोपोर्शनल बेसिस पे हो जाएंगे. 6 महीने का ही लगेगा, 4 महीने का ही लगेगा इंटरेस्ट कंपोनेंट, इंटरेस्ट कॉस्ट, Yes. Yes. सेम एज डेप्रिसिएशन. Hmm. करेक्ट. अगर मिड ईयर एक्विजिशन किया असेट का, तो डेप्रिसिएशन में भी फिर प्रोपोर्शन रेटा पे लगेगा डेप्रिसिएशन पूरे साल Hmm. का. Hmm. करेक्ट. Hmm. तो सेम चीज है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ, you have 5-10 minutes, but I want the correct answer. The same way which we did last question, simply just a one change is that we have commenced the lease in mid-year. So the depreciation और ना जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा, मेक श्योर करना वो प्रो रेटा बेस पे हो ईयरली. Okay. ओके. तो but I want bifurcation of both lease liability and non-current liability, Yeah. current and non-current. Okay? And question also asking the same, extract the financial statements, everything, P&L balance sheet. Breakup. Hmm.
But but Yeah. I'm a little confused for finding the interest, and because of it, I'm not able to find the non-current and current liability. Hmm. The rest of which I have found it. So can you please help? The value on day one we have given on the question only. Basically, the initial carrying amount Hmm. for lease liability and ROU. For ROU, there is no direct cost and other costs been given. So ROU is equal to lease payment. Understand? Hmm. Future lease payment. So let's solve this as per the pro forma. Uh, okay. Future lease payment is 7 lakhs. Interest part. This into 10% into how much? October, November, December, Jan, Feb, March. 6 by 12. Payment, how much you are doing? Annual repayment, 2 lakhs each. Okay. 535 is the closing. Hmm. Okay. Now this won't be bifurcated. The full year will be charged in second year. Same interest payment, lease payment created. So CL and CL. NCL is equal to closing balance, correct? CL is equals to this like 14. Okay. ROU depreciation will be for year one 7 lakhs into 7 lakhs divided by how many years? These 4 years and 4 years, 4 into 6 6 and months, 12. 8, 7 per day. Okay. Total charge to fee and is equal to how much? So This two plus how five much? double zero. Interest. 1,122,500. Okay. ये हो गया बैलेंस शीट में बाइफोकेशन. ये हो गया P&L. डन. फुल मार्क्स. सिंपल. कहाँ कंफ्यूज है? सर बट आपका आंसर गलत है। इलस्ट्रेशन में अलग दिया है आंसर। मैंने अभी चेक किया। व्हाट इज द पेज नंबर? 234। chain enter into contract. Lease payment commence. अच्छा. This is in advance now. Question is saying lease payment required for 4 annual installments, but starting is from 1st of October, which is the payment for lease agreement date only. हम्म। Understood? So the interest won't be part of first year. It will come from second year. Why not? Only for 6 months, na? Just a second. Into 5%. Now how much?
what they have done? Why they have calculated after 24,000, no? And we need closing balance on 31st March. We are standing at October. Now we have 6 months. How they got 25,000? 4,000 divided by 10. Yeah, I got the point. See, in first, what the question is saying, Hmm. payment is commencing from 1st October. Hmm. Here, if we are adding interest, then payment, इसका मतलब है कि payment is being made at the end. Okay. Okay, but in first, the first installment isn't paid on the date of commencement only. इसका मतलब जो interest charge होगा will be after reducing the payment ना. हम 7 lakh पे क्यों interest pay करेंगे? We have already paid 2 lakh from 7,000, 7 lakh. So interest charge will be on 5,000 ना, 5 lakh. जो एवरी ईयर 2 लाख पे कर रहे हैं उसका. Correct, correct, correct. See, this is equal to 10%, 630, 25,000. तो 5 लाख पे इंटरेस्ट तो अक्टूबर से मार्च तक ही काउंट करेंगे ना. हाँ तो 6 months का ही किया ना. हम्म. Done. This was a catch. Logic. I'll explain you again. या See, प्लीज डू. brought forward amount is what? Carrying amount, initial carrying amount. हम्म. If we say that interest is being added first and payment is reduced then, and then we get the closing balance, what does it mean? In मतलब ये है interest पूरे साल का भी added इस पे opening balance पे which was 7 lakh in our question, हम्म. and then we are paying 2 lakh of annual installment at the end. हम्म. Performa का मतलब ये हुआ ना कि interest and then we are paying and then we are getting the closing balance. हम्म. So payment is being made at the last. ठीक है, but the question ये कह रहा है कि 7 lakh पे interest पे नहीं करना है. Why? Because 7 lakh is the total lease liability at the date at sorry on 1st of October 2008. ठीक है, present value. हम्म. उसी दिन हमने 2 लाख पे कर दिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. इसका मतलब हमारी प्रिंसिपल अमाउंट ही जो है दैट इज 5 lakhs ना. तो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन दैट अमाउंट ना rather than on 7 lakh. We were overstating our expense earlier. What we were doing, we were calculating interest on 7 lakh, which was wrong. Understood? हम्म. But in second year everything is same. Second year, what they are saying, the question itself is saying annual installment commencing from 1st of October. हम्म. Correct? The second year, it's fair या. enough to say that 52 will be charged. In second year also, the interest will be part of this calculation, not the क्योंकि हर साल एनुअल पे एडवांस पेमेंट हो रहा है. 1st of October 2009, 1st of October 2010, 1st of October 2011. ओके, तो ओके. अगर उस साल का देखेंगे तो इसका मतलब एडवांस में पे हो गया है ना. हाँ. करेक्ट. तो एडवांस में पे हो गया है. तो व्हाट विल द कॉस्ट? 5 lakh minus already paid amount, 2, 2 लाख. 2 lakh into 6 डिवाइड बाय 10. 10% into 6 divided by 12.
Yeah. But one more thing, what is the reporting date? 1st of March. That is what 31st March is getting along. And when we are paying again on same. Then we'll get 52, no? In solution, in second year itself, second year also the interest charge was 12 months, 6 months. Why they have done this? If you see the second year calculation, 525 is the opening balance, Mm. interest is 25,000, and then payment is 2 lakh, and the closing balance is 1st of October. They have just counted from March to October. By March to October, no? 6 months, 6 months, 6 months, 10%. P2. Note that there is no interest charge in first half of the year, and the interest charge in second half of second year reflects the interest on balance at this once calculated the split of non-current level works as normal. Note that there is no interest charge in the first half of first year. Why interest is not charged in first half and the interest charge in second? ये जो interest है ना 25,000 का Mm. they got from October to March for 2000 for year ended 2010. They Mm. haven't calculated interest from March to October because if they have paid, that's what initially calculated is 25 and 325. Then our interest is coming 16 to 50. इसका मतलब interest still charged on 5 lakh. So the interest इसी पे charge हुआ है 5 lakh पे 6%. And what is the logic? Wait, let's put this question on hold. There's something catch we are not able to pick this time. I'd Okay. surely get back to you. No problem. Okay. Question is nice, a bit tricky. Illustration tricky. So let's continue with this same topic. Mm. The last topic of this chapter, sale and lease back. If an entity, what do you mean by sale and lease back? For example, I owned the bus, okay, Mm. and I sold it to you, and I again purchased from you on lease. Okay, so now earlier I was the owner of this bus. I sold it to you, so you are the owner now. And being an owner, you are the lessor and I'm the lessee because again I'm taking the same asset from you on lease. So Mm. I am the lessee now, you are the lessor. Okay, so this Mm. arrangement is known as sale and lease back. So question says, IFRS 16 says if an entity Mm. transfer an asset to another entity and then lease back from the buyer, correct?
they sold it, and they leased back from the buyer. The seller, which is the lessee, seller means I earlier I was the seller, now I become the lessee, correct? The lessor must assess whether the transfer was recorded as a sale or not. क्या act, क्या actually मैंने सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए थे? वर यू द ओनर जब मैंने सेल किया था? इफ योर आंसर इज yes, then the sale transaction would come under IFRS 15 revenue Okay. sale. Hmm. करेक्ट. इफ इज नॉट द सेल, अगर सेल था ही नहीं, तो जो प्रोसीड्स मैंने आप रिसीव किया होगा फ्रॉम यू, वो क्या होंगे मेरे लिए? यू नो दिस. आई हैव ऑलवेज टोल्ड, इफ आई हैव गिवन यू नथिंग एंड आई हैव टेकन समथिंग, someone else from the to the business, what it's recorded? Liability. Liability. Okay. If the transfer is not the sale, then the seller lessee continues to record the transferred asset, will continue to recognize the financial liability equal to the transfer proceed. For example, if it was not the sale, actual में risk and reward transfer नहीं हुए थे to you, Hmm. so technically it's my asset only. मेरे book में तो show होगा ही होगा. So I Hmm. cannot remove the asset from my book. I'll continue to show it in my book, and the proceeds which I received from you for the asset is the liability for me, because I've given you nothing. I've taken cash from you from Right. that point of view. So it's a liability for me, and the liability would be recorded from as per IFRS 9 financial instrument. We'll learn this in IFRS Okay. 9. Okay. In simpler terms, the transfer proceeds are treated as loan. The detailed accounting treatment of financial assets and financial liability is covered in Chapter 9, which is IFRS 9, financial instruments. Hmm. Okay. What we'll learn now, if the sale is, if the transfer is the same, means all the risk and reward were transferred to you, and I Right. lease back the same asset from you. Hmm. So what the current scenario is being, I have given you some asset on the carrying value which was standing in my book, जो मेरे book में stand हो रहा था carrying amount. I Hmm. transferred you on the fair value. For example, 8,000 का asset था, I transferred you on 10,000. इसका मतलब 2,000 is not my profit, because the same asset I've retained again from you as a lease. So technically जो carrying amount मेरे books में show कर रही थी पहले, I transfer it to you and again lease back to you on certain amount. For example, um, I've agreed with you and says the future lease payment, future lease liability, present value future lease liabilities 7 lakh. तो इसका मतलब क्या हुआ? 8 lakh की liability, 8 lakh का asset was standing in my books earlier. I sell back to you and again I retain the lease rights, and I'm showing again the asset as ROU rather than the same asset which I was showing earlier. Right. Correct? Hmm. तो टेक्निकली क्या हो रहा है? 8,000 का असेट सेल हो रहा है, 7,000 का असेट वापस आ जा रहा है. करेक्ट. सो ओनली द प्रॉफिट ऑफ 1,000 पोर्शन, जो 1,000 की कैरिंग अमाउंट का जो पोर्शन आई ट्रांसफर टू यू टेक्निकली, बिकॉज 7,000 की तो राइट्स मैंने वापस रिटेन कर लिया टेक्निकली. Right. करेक्ट. तो सिर्फ 1,000 का पोर्शन का जो प्रॉफिट होगा विल बी अकाउंटेड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट, बाकी का नहीं होगा, क्योंकि बाकी के राइट्स मेरे को मिल गए. फॉर एग्जाम्पल इन आर केस द प्रॉफिट वॉज 2 lakh, 2,000 Hmm. ना, 8,000 का asset I sold it for 10,000. So I won't be recording I recording the profit of 2,000 in my books of account, because मैंने liability 8,000 की 7,000 की रिटेन कर ली है. सेम Hmm. 1,000 liability रिटेन कर ली, और ROU भी मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर रहा हूँ एज 7,000, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लाइबिलिटी, राइट? Hmm. फ्यूचर लीज पेमेंट्स. So only I'll book profit of 1,000 portion, partial. करेक्ट. तो कितना प्रॉफिट होता? 8,000 का असेट था, 10,000 में सेल किया, वापिस लिया, तो फ्यूचर लीज लाइबिलिटी की वैल्यू क्या थी? 7,000. तो Hmm. इसका मतलब जो 2,000 मेरा प्रॉफिट अर्लियर था, वो कितना होगा? कितना ही बुक करूंगा? 2,000 इंटू 7,000 डिवाइड बाई 8,000. करेक्ट. 7,000 की राइट रिटेन करी हाँ. आउट ऑफ 8,000. करेक्ट.
So I can only book 750. Okay. I'll book 250, sorry. I'll book 250, not 750. 1000 का portion. Correct? Hmm. What is 750? What we're understanding with 750? This is the profit which we retain. Correct? 2000 में से Hmm. 7000 I retained out of 8000. Correct? Right. This was the profit which I transferred. और जितना ट्रांसफर किया है उतना ही रिकॉर्ड करूंगा ना, बिकॉज दैट इज द सेल. और जितना ट्रांसफर किया है उतना ही सेल है, तो उतना ही प्रॉफिट बुक होगा. Hmm. करेक्ट? Hmm. थोड़ा ब्रॉड माइंड से इफ यू कैन थिंक द एंटायर सिचुएशन आई एम क्रिएटिंग फॉर यू. Yes, sir. करेक्ट? लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन क्वेश्चन. On 1st of Jan 2004, Blank sells an equipment to Fume for its fair value. Correct? The Hmm. carrying amount, the equipment has a carrying amount 8000 prior to sale. इसका मतलब ब्लैंक के बुक में कैरिंग अमाउंट 8000 का शो कर रहा होगा, 8 लाख. उसने फ्यूम को $1 million पे बेच दिया, विच इज 10 लाख. करेक्ट? लेट्स कन्वर्ट दिस वैल्यूज इनटू 1000. 800 का was showing in the book, sold it at 1000 to Fume. Okay. Hmm. This sale represents the satisfaction of performance obligation in accordance with IFRS 15. What is performance obligation satisfaction? It means that the control has been transferred. This performance obligation has been satisfied. Once the Right. performance obligation is satisfied, the sale will be recorded as IFRS 15 and we have to book profit. But the Hmm. question is that how much to book profit? करेक्ट? क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते 1800 का था, 1000 में सेल किया, 200 का विल बुक. नो, because now the question is saying blank, which was the earlier seller, now it's a lessee, enters into lease agreement with Fume for the right of use asset of the equipment for next 4 years. Correct? Hmm. Annual payment जो डिसाइड किया हमने, that was 2 lakh, are due at the end of each year, which means arrears at the end of each year. And the interest rate is 9%. Question also giving the present value as lease payment is 650. इसका मतलब 8000 का पहले शो कर रहा था बुक्स में, 800 का. I retain the rights of 650 again. इसका मतलब सिर्फ 150 का प्रॉफिट बुक करूंगा मैं बुक्स में. अंडरस्टूड? Right. परफेक्ट. ओके, Yes. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ. Explain how blank will account for this transaction on. Now question is saying how will account. इसका मतलब हमें सब कुछ अकाउंट करना है, प्रॉफिट शो करना है, और लीज, ये जो लीज ट्रांजैक्शन हुआ है उसका लीज लायबिलिटी, ब्रेकअप, नॉन करंट, आरओयू, पीएनएल में कितना चार्ज होगा, सब कुछ. करेक्ट? तो Hmm. लीज, लेट्स स्टार्ट विद लीज लायबिलिटी फर्स्ट. लीज present PV of lease payment is how much? 650 is given in the question. ROE is also equivalent to 650 because there is no direct or any extra cost. Okay. Right. Hmm. Brought forward. This is the interest, but how much is the rate of interest? 9%. Okay. 9%. How much is the payment annually? 200. 508 is the closing balance. Okay. Hmm. This will become the opening. Same treatment. Okay. Now the closing balance is
354. Year 1, year 2. The reason I'm doing is till 2 years is that मेरे को सिर्फ current year में CL और non CL कैलकुलेट करना है, करेक्ट. Yeah. Yeah. नेक्स्ट ईयर जब करना होगा कैलकुलेट कर CL और नॉन CL, तब मैं वापस ईयर 3 और ईयर 4 कैलकुलेट करूंगा, करेक्ट. मेरे को भी नीड ही नहीं है ईयर 3 और 4. तो CL and non CL, how much? CL would be this, non CL would be, sorry, non CL would be 354, CL would be 154, which is the same 200 or 45, 154, correct. Difference of this, so we calculated this as well. Now ROU, depreciation, interest will book 58 in year 1. Okay. See, the question is still asking on the day of agreement only, but I'm calculating for 1 year, 1 more year at the reporting date at Hmm. 31st December 2004. Just to revise everything, कि interest or depreciation कैसे होगा. ROU, how much was the ROU? 650. This divided by number of years, how much? Lease period 4 years, 162. So the total charge in P&L is equal to ROU plus depreciation plus interest, 221. Okay, Hmm. 221. 221 is in thousand, so 2,21,000 technically if you see. Okay, this was the balance sheet, balance sheet, and P&L. Okay, now let book the profit as well. Profit which we retain, which one we transfer. Okay, Yeah. only the transferred profit we are going to book in our account. Okay, so 150 into how I got 150, 800 का right books में already show कर रहा था. I हाँ. sold it, again get back 650 as Right. ROU. ठीक है, Right. पहले इक्विपमेंट में शो कर रहा था, इक्विपमेंट टर्म था, Hmm. अब Hmm. ROU के नाम से शो हो रहा है, बट असेट में से शो हो रहा है ना, सेम असेट, Yes. करेक्ट. इनटू 150 इनटू Hmm. डिवाइड बाय we can calculate the other way as well. How much was the proceed? 1000, right? 650. Difference was 350. This should be technically our, basically this is the fair value. Hmm. Rights retained, RR, rights retained 650. The different carrying amount कितना हुआ? 350, करेक्ट. Yeah. कैरिंग अमाउंट तो वही हुआ ना. Hmm. 300 into 1000 what fair value, divide by 350 into 800 divide by 1000. Hello. Yes. Yeah, so 280 is the carrying amount transfer. Right. Carrying amount transfer, that's what we are calculating. Hmm. How? 350 was the carrying amount after sale. Hmm. Difference Hmm. of what?
fair value and the right we received 650. 650, sorry, 350. 350 into 800 divide by 1000. We are proportionating 800 tha pehle, and the fair value got 1000. So the carrying value of 800 only, proportionate basis pe. Correct. So the carrying amount is 3280. How much Right. is the profit? 70. Perfect. So this is Yes. the profit. Let's see the journal entry as well. Debit, what we got? We got cash. How much? We got cash 1000. 1000 में बेचा. Correct. Debit ROU भी होगा. Correct. ROU how much? 650. Right of use asset ना carrying amount उसकी वही थी at day 1. मशीनरी चली जाएगी. सॉरी इक्विपमेंट. इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ट्रांजैक्शन वाज एक्चुअली अ सेल. Yes. क्या था 800 था ना कॉस्ट. या 800. Credit again what? Lease liability 650. Correct. Hmm. I mean, fun. Last profit. 70. What do you think? Something is wrong. I want you to catch. Something is wrong. Let's give me a hint. In ROU, something is wrong. Right. Just a second. नहीं समझ में. नहीं आइडिया रहा. नहीं. What I'm saying is that अगर अगर ये कैश ये लीज बायबैक होता ही नहीं, सिंपल लीज ट्रांजैक्शन होता तो 650 is good. But Okay. initially it was my asset recorded at 800. I lease it back. I lease back at 650. So the actual rights I have transferred is not 650. How much right I have retained? Only the retained portion I'll record as ROU. Right. Correct? The retained portion. The retained portion is how much? Retained portion is 650. Now retained out of 800, I retained 650. हाँ. Correct? So 650 into 800 divide by 1000 proportion 520. Right. Correct? Yeah. Now the general entry is valid. 520, 800 is the equipment, 650 and 7. Okay. Even if there is a catch, it's a good trick of this. Even if you didn't got the profit correct, for example, you can somewhere made a mistake in this calculation, and if you just go with the journal entry, if you see that if you want to just check whether I've done right or wrong, and if you go with journal entry path, what will you do? You will firstly record cash, then you will record ROU. ROU what? How much rights I retain. Right. Okay. And retain is what? 650 into 800 divided by 1000. Out of. Correct? Out of 800, I retained 650 divided by 1000, which was the fair value. ठीक है. 520. I recorded 520 here. Credit was equipment which was straightforward given the question कि 800 का carrying amount था तो वो तो de-recognize हो जाएगा because sale था books में से. Lease liability 650 हो जाएगा. You know because this is our obligation. So what is the difference in journal entry?
This is the debit section. This is the credit section. प्रॉफिट नहीं है ना? 450। तो डिफरेंस करने के लिए क्या एक ही कंपोनेंट मिसिंग है, विच इज प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट गलत इसमें कैलकुलेट नहीं भी किया, फिर भी अगर ऐसे ही देखें कि 520 माइनस 450, 70। अंडरस्टूड। यस। तो अगर गलत भी आया तो मेक श्योर यू आर क्रॉस चेकिंग विद दिस कि मेरा जर्नल एंट्री टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड। राइट राइट तो राइट। अगर जर्नल एंट्री टैली हो गया, सब कुछ टैली हो गया, तो फिर तो सही है। पर अगर जर्नल एंट्री टैली नहीं हुई तो समवेयर वी आर डूइंग मिस्टेक। तो इट्स बेटर टू क्रॉस चेक फ्रॉम बोथ द साइड। और गॉट अगर इट। प्रॉफिट गलत आ भी रहा है, नथिंग टू बी वरी। सीधा तो डेबिट का और क्रेडिट का टोटल मैच करो, पर मेक श्योर करना कि यू हैव रिकॉर्डेड कैश, आरओयू, इक्विपमेंट एंड लीज लायबिलिटी। क्योंकि लास्ट कंपोनेंट जो बचा है वही प्रॉफिट। अगर फॉर एग्जांपल अगर लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की, तो डिफरेंस फिर 720 आ जाएगा, और 720 में से 70 इज द प्रॉफिट एंड 650 इज द लीज पेमेंट। करेक्ट। मेक श्योर करना लास्ट कंपोनेंट प्रॉफिट ही बचाओ, बाकी सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया हो, तभी उसका डिफरेंस जो आएगा दैट वुड बी प्रॉफिट डिफरेंस। करेक्ट। यस। और ये डे वन पे एंट्री है, एंट्री एट डे वन, क्योंकि सेल था। अब रिपोर्टिंग डेट पे ये एंट्री हो जाएगी। आई ऑलरेडी मेड यू दिस वन, सी एल एन सी एल प्रॉफिट एंड टोटल चार्ज टू पी एन एल। क्योंकि अब तो लीज में आ गए, तो लीज का चलेगा, पी एन एल का, पी एन एल में डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट, लीज लाइबिलिटी में सी एल नॉन सी एल, और आर ओ यू में कैरिंग अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्ट। यस। परफेक्ट। यस। So yeah, I think we are done with the today's agenda as well, which is IFRS 16. So are we ending the session now? Yeah, we are ending the session for today. Okay, no problem. Okay. So thank you so much for joining. Yeah. Bye. Take care. Goodbye. Bye.